Hello everyone. Please let me know, am I audible or not? Please let me know, am I audible or not? So as you know, today we have come for the mains answer writing classes, and today's topic is about democracy, and which is be covering the thinking pattern of Gandhi and Ambedkar. So our topic is about Gandhi, Ambedkar and democracy. So this is a part of the daily answer writing for us, ताकि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग आसान हो जाए एंड यू कैन डेफिनेटली मेक योर आंसर बाय योरसेल्फ. ठीक है. So with that also, one more thing I want to convey here. We at Maluka AS provide you the guaranteed prelims and the assured main programs. For that, you need to call on this number which has been given here, 9910133084, and उसके साथ you can just put the referral code, that is PUJ18, for having 10% discount on the available fees. मतलब 47,500 पे आपको 10% discount avail करने के लिए you can go by this number and you can put your referral code here for the online and the live classes. ठीक है? Now we will move forwards towards our subject today. क्या है? The popular understanding about democracies and Gandhiji and Ambedkar. So here we will talk and cover about those topic which is been connected to the ideology of Gandhiji and Ambedkar regarding democracy. Okay, just let me know, am I audible or not? Whoever is there at the chat zone, please let me know, am I audible or not? So as you know, the way we start our writing with the introductory part in the mains answer writing, और जब आपको पता है, this is a chapter which can be covered in the syllabus of GS paper 1, and other than that, the way you should write any question regarding the same topic in this format only. And second thing is that this news has been covered in the Indian Express, explained the Indian Express, okay, Indian Express explained first one. तो आज हम बात करेंगे शुरुआत से यहाँ पे कि इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसा होना चाहिए. पहली बात तो ये है कि पहले डेमोक्रेसी के मतलब थोड़ा सा आप समझाओ, then move forwards. First thing is that here the popular understanding about democracy is that they are elected governments. यही है, everyone knows about democracy कि ये elected governments के बारे में बात होता है, but it is not only the thing only run on the basis of the elected government. What are the part it actually collected through? Last 2500 years, democracy has developed system of efficient check and balance. Check and balance भी एक बहुत important part होती है for a elected democratic government. A check and balance क्या होता है? If
द चेक एंड बैलेंस इज नॉट देयर, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकता है. वाई सो? बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द चेक एंड बैलेंस कि पहले जो भी पॉलिसीज अंडरटेक हुआ जा रहा है वो सही है क्या नहीं. इसलिए इन आवर केस ऑफ लाइक द केस ऑफ इंडिया ऑल्सो दिस चेक एंड बैलेंस इज ऑल्सो देयर. क्यों? क्योंकि अगर इंडियन कोई पॉलिसी मेकर्स कुछ गलत करते हैं तो जुडिशियरी इज ऑल्सो देयर. तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी के दे ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर. कि किसी से भी कुछ गलत कुछ पॉलिसी बन जाता है विच इज अगेंस्ट द affirmation, against the good the pros of the citizen, तब जाकर वो चेक एंड बैलेंस की रूल्स लागू होता है. अच्छा खासा डेमोक्रेसी तभी बन सकता है जब ये चेक एंड बैलेंस भी हो सकता है. दैट यू शुड मेंशन इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. एंड सच बैलेंस इज क्रिटिकल टू देयर सक्सेस. अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर डेमोक्रेसी के बारे में जानना चाहिए तो इसमें हमें क्या क्या वी शुड मेंशन कि पहले द फर्स्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कम्स इन द ग्रीक्स. एट द एंशिएंट टाइम ग्रीस में इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था. इट वाज ए एक्सपेरिमेंट ऑन द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे पहले क्या था, मोनार्कीज था, ओलिगार्सीज था, डेमोक्रेसीज था among the Greek city states in the 5th century BC. NCERT आपने जरूर पढ़ा होगा. There in the class 9 history, in the first part, you can understand these changeabilities. कि यहाँ पे जब northern part of India में जब the dynasties were evolving from the Sultanate to Mughal, at that time हमारी वेस्टर्न जो कंटिनेंट्स है वहां पे दे वेर प्रिवेलिंग विथ सम न्यू आइडियाज. पहले वहां पे क्या चलता था, मोनार्कीज जो किंगशिप कहते हैं, ओलिगार्सीज मतलब जहां पे अमीर द रिच एक्चुअली रूल है. लेकिन यहाँ पे ये डेमोक्रेसीज के आइडियाज आते हैं, वो आते हैं 5th century BC में. इसके बारे में एरिस्टोटल ने लिखा था. व्हाट यू नीड टू मेंशन हियर कि while monarchies were for the benefit of the monarchs and oligarchies for the benefit of the men with means, तब जाकर democracy were the benefit of the men without means. मतलब क्या है? The point is that कि when democracy की बात आती है ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास कुछ है नहीं, जो oligarchies है, oligarchy पे बिलीव करते हैं. Those people goes against, those people has the tendency to do something because of their wealth to the person who are with means. And also the monarchies में तो always they are in the hierarchy, तो वो लोग तो every sort of the individual मतलब सोसाइटी के कोई भी लेवल पे they will be helped, anyhow they will be helped. लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो this is not about the monarchs, this is not about the oligarchs, this is all about the normal civilization, all those men who are without means. अब ये डेमोक्रेसी की जो आइडिया है ये बहुत लंबे टाइम से चलकर देन इट कम टू द इन्फोर्समेंट. इन द वर्ल्ड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अगर बात किया जाए तो यू नो यूएस हो गया, यूके हो गया एंड इंडिया. These are the biggest democracies of the world, जहां पे the government is depending on the means of the normal man, the normal civilization. और क्या है, यहाँ पे एक फाइन बैलेंस भी है जो कि इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन के साथ एक बहुत अच्छा सा बैलेंस करा जाता है, ठीक है, विथ इनफ सेफगार्ड्स. नाउ इंडिया में ये डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, यू नीड टू रेफर दैट थिंग ऑल्सो, क्योंकि आपकी क्वेश्चन है डेमोक्रेसी गांधी एंड अंबेडकर के बारे में. सो डेमोक्रेसी पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी, द पास्ट फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का थोड़ा सा हिस्ट्री, और उसके बाद द प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी, और लास्ट में जाकर यू हैव टू मेंशन दिस अंडरस्टैंडिंग between Gandhi and Ambedkar about the concept of democracy. There was much
skepticism about the idea of universal adult franchises during the making of the Indian Constitution. आपको पता है ये कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक मतलब जो रूलिंग एलिमेंट होता है जो हु कैन डू द इलेक्शन वो कैसे होता है दैट इज फ्रॉम द skepticism about the idea of universal adult franchises. लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने इन्होंने कहा था असेंबली मेंबर्स को अबाउट द रॉ पॉलिटिकल विजडम ऑफ द एवरेज इंडियन एज आल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन टू सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो चलेगा उसको कैसे एवरेज इंडियन के साथ उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा उसके बारे में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की he has told about. This is why we can find out the reason behind it कि कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी डेवलपमेंट हुआ है. However, in the infamous emergency exposed the flaws in the Indian democracy. अब सबको पता है 1960s की दौर पे 1970s की दौर पे the emergency was there. So that emergency was being provocated by the then prime minister. जो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन डेमोक्रेटिक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था बिकॉज देयर वाज अ फेयर चांस कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रूलिंग पार्टी की मेंटेलिटी को कह सकते हो कि जबरदस्ती आरोप मतलब थोप दिया मतलब एट दैट टाइम दे हैड प्रोवोकेटेड द then प्राइम मिनिस्टर. तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द कलेक्टिव डिसीजन. ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कि गांधी एंड अंबेडकर डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन के बारे में. पहले पढ़ लेते कि महात्मा गांधी का क्या था. महात्मा गांधी वॉज नेवर अ बिग एडमायरर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम. क्यों? क्योंकि गांधी का व्यू ऐसे था कि ब्रिटिश सिस्टम द पार्लियामेंट्री वर्क्स ओनली फॉर द पार्टीशन इंटरेस्ट. ब्रिटिश जो सिस्टम है वो सिर्फ पार्लियामेंट्री इंटरेस्ट के लिए बना गया है but not for the national interest. And that's so true. British has come not to stay in India. They had come to rule India and get all the benefit from the trading from India and to have the drain of wealth from India to Britain. गांधी जो थे उन्होंने कहा कि उन्होंने ये रेफर किया था कि टायरनी ऑफ द ब्रिटिश रूल. एंड आम्बेडकर उन्होंने भी ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम जो इंडिया में तब प्रिवेल था उसके अगेंस्ट ही स्टूड आउट. फॉर गांधी डेमोक्रेसी meant the weak getting the same chance as the strong. अगर गांधी की वे में हम सोचे डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, यहाँ पे जो वीक है और जो स्ट्रॉन्ग है दोनों के पास will have the same power to make the government, build the government, destroy the government. That is the very well-known words, you know, the phrase by the government, yeah, by the people, for the people, of the people, right? So that is the actual idea of democracy that Gandhi used to believe in. And he wrote in Harijan, January 1937 में कि political independence he meant system suitable to Indian context, that is राम राज्य. अगर इंडिया के लिए कोई सुइटेबल कॉन्टेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड राम राज्य. राम राज्य मतलब क्या है? सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर मॉरल अथॉरिटी. अपनी नीति के थ्रू जो अथॉरिटी बनती है उस पे सॉवरेनिटी लाभ करना. व्हाट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी? सार्वभौमत्व. व्हाट डज इट मीन? कि आपका खुद का कौन सा काम करेगा फॉर टेकिंग एनी डिसीजन, not the other third parties or third power influence will be there. ठीक है. Gandhi's greater emphasis was on the public morality. क्योंकि गांधी की जो एम्फसाइजेशन था वो था पब्लिक मोरालिटी के ऊपर. दिस इज व्हाई ही ऑलवेज वर्कड फॉर द for the development of the truth, for the development of the ahimsa. Now on the other way, what is about B.R. Ambedkar? He also true described democracy in India as only a top dressing. For him, for Ambedkar also, democracy was not truly prevailing in India because it was like a top dressing. Upri upri ek
मतवाद था, ऊपरी ऊपरी देखे हुआ एक आइडियोलॉजी था. एन इंडियन सॉइल विच इज एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक. इंडिया में अनडेमोक्रेसी क्यों बताया जा रहा था इन द कंटेक्स्ट ऑफ बी आर अम्बेडकर? क्योंकि बी आर अम्बेडकर के टाइम when he started the annihilation of the casteism, तब इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे बढ़ेगा जबकि कास्टिज्म के थ्रू डेमोक्रेसी वहां पर ही खत्म हो जाता है. जबकि डेमोक्रेसी की मतलब ही है ना कोई रेशियल डिविजन रहेगा, ना कोई डेमोक्रेट मतलब कोई अदर कलर कास्ट क्रीड के ऊपर कोई भी डिमार्केशन रहेगा. बट जब ये डिमार्केशन इंडिया में तब प्रिवेल था, देन डेमोक्रेसी कैसे बन सकता है? सो इट इज अनडेमोक्रेटिक. और ये concept of the democracy is only a top dressing for him. He underscored the importance of the social democracy for the success of political democracy. अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए मतलब द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल दैट कैन बी अचीव्ड व्हेन द सोशल डेमोक्रेसी विल बी देयर. एंड सोशल डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है? जब द बैलेंस विल बी देयर इन द सिविलाइजेशन, इन द सिविलियंस, इन द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ सिंगल नेशन. ना वहां पे जात की ऊंच नीच रहेगी, ना ही वहां पे रिलीजन की ऊंच नीच रहेगी. तब जाकर एक सोशल डेमोक्रेसी बन सकता है. Okay, now neither was against democracy, but both were against the idea of majoritarian rule. What is mean by majoritarian rule? जैसे ओलिगर्सी में होती है, जिनके पास पावर है वही रूल करेगा. दिस इज अबाउट द मेजोरिटेरियन रूल. लेकिन अगर देखा जाए द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो सबकी रूलिंग होनी चाहिए. तो दे बोथ वर अगेंस्ट दिस थिंग कि कोई हायर की होगा जो डेमोक्रेसी को मतलब दे विल हैव द चार्ज ऑफ द डेमोक्रेसी. ऐसे नहीं हो सकता. तो फॉर अंबेडकर इट वाज गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस. अंबेडकर के लिए ये था कि डेमोक्रेसी एक मीडियम है, एक जरिया है जहां से जो जिसकी आवाज whose sound is unheard to the government, the people from the grassroots, the people who are from the lowest strata of the society, लेकिन जो है बेस ऑफ द सोसाइटी, उनकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे. उनकी इलेक्टिव उन्होंने जिनको नॉमिनेटेड किया या इलेक्शन के थ्रू जिसको जिताया, उनकी आवाज उन तक पहुंचे. तब जाकर ये डेमोक्रेसी की ओरिजिनल मीनिंग बनता है इन केस ऑफ अंबेडकर आइडियोलॉजी. दिस इज नॉट अबाउट अंबेडकर और गांधीज आइडियोलॉजी. दैट शुड बी अ प्रॉपर आइडियोलॉजी व्हेन इट इज अबाउट अ ट्रू डेमोक्रेसी. ठीक है. अब डेमोक्रेसी की सक्सेस करने के लिए फॉर डेमोक्रेसी टू सक्सीड बोथ बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स एंड पब्लिक मोरालिटी. जहां पे पार्लियामेंटरी मेजोरिटीज नहीं काम करेगा. पार्लियामेंट में कौन ज्यादा है दैट विल नॉट मैटर, रादर इट विल मैटर कि कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स क्या बोलते हैं एंड पब्लिक मोरालिटी क्या है, जिसके बारे में गांधी हैज वर्कड अ लॉट. कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स जो है इट्स अबाउट लीडर रेस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशन. कब जाकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स विल फुलफिल्ड इट मेजरमेंट? जबकि जो लीडर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टी को डिनोट करते हैं पार्लियामेंट में, दे विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. जो कन्वेंशन चला आ रहा है अब तक उसको और इंस्टीट्यूशनल पावर को. He insisted that for Indian democracy to succeed, the Congress should convert itself into Lok Sevak Sangh and work as the grassroots level. Because the Congress has been told here, because these both personalities were connected to this political party named the INC, Indian National Congress. ठीक है. तो उनकी ये था कि कांग्रेस will be a part of being a lok sevak, what our prime minister has also told in his first independence day's greeting of 2014 15th August. Okay, when a political person, either it's a party representative or a person from any party and who is being a representative of the grassroots person, the person should be the lok sevak.
तब जाकर डेमोक्रेसी का ओरिजिनल मीनिंग सामने आएगा, तभी जाकर जो इलेक्टेड पर्सन इज देयर एट द पार्लियामेंट, तभी जाकर उनकी जो पॉलिसीज होंगे दैट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द नॉर्मल पीपल और द सिविलियन। वो चीज है। अब लास्ट में हमें एक कंक्लूजन डालनी होती है आफ्टर दिस काइंड ऑफ एफर्मेशन, जिसमें आपके एनालिसिस होता है। एंड द व्हाट इज द कंक्लूजन यू कैन पुट कि इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बात किया जाएगा तो इट्स इज एनविसेजेस बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन thrived essentially because of the respect of the leader for ethical constitutionalism. What is about the ethical constitutionalism? Constitution को अवॉइड करना by ethical moralities, ठीक है, and moral activism of the grassroots activists. Neither should see the other as the enemy and try to bring them down. किसी को भी अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जो एक्टिविस्ट है उनको अगर इफ यू टेक इट एज एन एनिमी, सी थिंकिंग वन अ कंपिटिटर but thinking about one that a person is my enemy, that is totally different scenario. Because the person you will take as your competitor, that will always make you, it will definitely break you sometime, but it will make you by the understanding, and therefrom you can have the self criticism, and self criticism is always good for bringing out the best of you, right? Lekin when you are thinking about someone, the person is your enemy, so the tassel will be there, everything will be shattered down at some level of time. So taking the person, the activist, as an enemy is a wrong idea, is when you want to prevail the democracy in India. But the better to see the person as a competitor and take their advice to make yourself better. So this was the details of our class today. कल की एक ऑफ लेंगे हम संडे को, and from Monday itself we will again start with our this daily आंसर राइटिंग प्रोग्राम क्लास। यहाँ से आप क्वेश्चन इसकी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। यू कैन हैव इवन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऐसे टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट गो एंड चेक एंड राइट इट डाउन बाय योर ओन लैंग्वेज बाय गेटिंग द रेफरेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। शाम को हम मिलेंगे फिर से डेली एनालिसिस करने के लिए, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए। तब तक अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।